महाराष्ट्र वालों का हाउस ये काम है उसके ऊपर वाली मंजिल के कमरों में थोड़े अंग्रेज ताकि नीचे वालों में दिल्ली राजस्थान वाले सारे कमरों वाला हॉल है और उसके साथ में गेस्ट हाउस है।
वो कहते होते थे फिर भी बाबा जयंत सिंह को नाम मिले
सो प्यारे साड़ी बुजुर्गों ने दी है शांति दया करके फिर भी आपकी आत्मा में रहते हैं सारी फिर भी उनको उतारा हुई है कि साड़ा आ भी कारोबार हो जाए आ भी धंधा हो जाए बच्चे तकड़े हो जाए शादी हो जाए यही देखते हैं सो ये बात है दोपहर के समय ही करें और कोशिश यही करें कि कम से कम जाने के लिए या नहाने के लिए करें। ये एक बहुत जरूरी बेनती है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बेनती को स्वीकार करेंगे क्योंकि सब प्रेमियों का ध्यान रखने कार्यक्रम शहर में हो रहा है लेकिन क्योंकि बाबा जी की आवाज है यहाँ पर है बाबा जी कुछ भी सारा दिन इसी एरिए के अंदर इसी हॉल में रहेंगे सिर्फ दोपहर के लिए खाना खाने के लिए अपनी जगह जाएंगे इसलिए आप सबसे बेनती है कि आप भी अनुशासन का पालन करें और इन्हीं हॉल के अलावा हर रोज 3 से 5 जो बाबा जी से मिलने का समय है उस दौरान भी जो प्रेमी भाई बहन यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे बाबा जी से मिलने जाने के लिए उनसे बेनती है कि वे शांति बनाए रखें और यहाँ पर पौने 7 बजे तक सत्संग हुआ करेगा। नामदान का कार्यक्रम 16 जनवरी को सुबह वी डोंट हैव मच टाइम इन दिस प्रोग्राम। 1 day is already gone and we only have 6 more days left with him. So how to derive maximum benefit from this very short period? I asked Sanjay and he said, well, I would like to say only one sentence, and that is that if people would take good care of their health, take good care of their children, and if they would maintain the discipline and remembrance, they will be doing the seva in this program, which you know is not as effective. So I think that is enough for all the dealers. Please take good care of your health, please maintain the discipline and remembrance, follow the program, try to go to bed as scheduled as early possible so that you can get up early in the morning and try to maintain a schedule which is announced. It is not different than the schedule we have in Rajasthan and we hope that you will have good health and you will be able to follow this schedule. From tomorrow morning we will have the private interviews only for those dear ones, those who have come only for this program. The dear ones who have already been in group 4 and those who are going in group 5 should not sign up and should not try to be handy. This time is only for those dear ones who have come only for this program. So Aliyah Pusan will sign up the dear ones and we will have interviews starting at 8:45. So those who are signed up for the day should try to finish.
गाड़ी में भेज देंगे। दूसरी गाड़ी में आ रहा है ना, गुरमेल का भी सामान है। ठीक है पीछे हाँ भाई, बड़ा सुहावना टाइम है, सुबह अमृत वेला है। मैं दसदा हूँ कि अगर सानू भागा नाल गुरु मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, नाम का भेद भी मिल जाए, तो साडा फर्ज बनता है कि सच्चे दिलों जो रास्ता सानू बताया गया शब्द नाम की कमाई का, उस दे उत्ते असीं तुरीए और अपना भजन अभ्यास करिए। इस कीमती वक्त तो असीं फायदा उठाइए, बाहर किसी खुराक की तरफ तवज्जो ना दो, क्योंकि हर व्यक्ति आपो अपने कारोबार में लग्या है। साडा भी फर्ज बनता है जिस कारोबार वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं उसे नूं ही करिए। It's a very pleasant time, still the embroidered hour. Often I have said that if fortunately we get the master, a true master, and if fortunately we get the Shabad Naam, then it becomes our responsibility to do our bhajan and simran wholeheartedly and sincerely. So do not pay any attention to the outer disturbances or the sounds, because everybody is busy doing his work, and when we are sitting here for doing something special, we should be also doing only our work. So keep your mind quiet, close your eyes and start doing the meditation. Please close your eyes and start meditating.
ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसा जी, मन का संशा, उतर गया मेरे मन का संशा जी, मन का संशा। जब तेरा दर्शन दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी जी, बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी जी, बिरथा जानी। अपना नाम नाम जपाया, अपना
तेरी इच्छा पूरी कर। Children are very loving. The bhajans are very good. I am very glad that, like in Bangalore, over here also, Mary has been doing this program of teaching the bhajans to children. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਲਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ को ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ मैं आपका कारोबार तो सबको पहला बिल्ली को कह देख प्यारी बहन, मैनू अगर $50 दे दे, मैं तेरे 2 दिनों ठीक 12 बजे ऐतवार दे दूंगी। उसने खुशी खुशी देते कि भाई हाँ जो आप वायदा करनी है इससे दे देना है। फिर कुत्ते के पास गई, कुत्ते को कहने लगी कि प्यारे जी मेरा हाथ तंग है, आप मैंने $100 दे दे, मेरी अच्छी गुजरी, मैं ऐतवार दे दे 12 बजे 5 मिनट 10 मिनट दे दूँगी। वो कहता अच्छा है जो मैं लेकर जो टाइम आपने उस पर पैसे दे दिए उस तो मुझे लड़की के पास गए तो उसको कहने लगी अरे भाई हाथ बड़ा तंग है, अगर $200 दे दें मैं आपके वायदे ऊपर मुड़ जाऊँगी। उस दिन भी उस 12 बजे 10 मिनट का क्लास तो उस वक्त तुम आ जाए मैं दे दूँगी। फिर चीत के पास जीते को कह लगी प्यारे जी मेरा हाथ बड़ा तंग है, अगर ये $300 मैं तेरे 12 बजे 10 मिनट पर दे दूँगी। आपने वो कहना ठीक और उस टाइम पे उस मगर शेर के पास थी कहने लगी प्यारे भैया हाथ बड़ा तंग है, अगर ये तुम $500 दे दे मेरी अच्छी गुजर कर रही थी, मैं तो जो पैसे वो 12 बजे के 10 मिनट दे दूँगी तुम आ जाना। वो कहने लगा अच्छा लेगा और चिराग दिल्ली लेने वास्ते आए 2-4 मिनट बात कर दी रही क्योंकि 5 मिनट ऊपर कुत्ते का भी करार से कुत्ता आ गया कहने लगी देख प्यारे वीर मेरे पास और का कुछ नहीं है, बिल्ली है ये तुम खा ला। कुत्ते ने झपट मारी वो बिल्ली को खा लिया और पैसे मंगे इतने अजे वो खा ही रहा सीगा लकड़ बुढ़ा आ गया। वो कहने लग गया कि भैन जो करार है वो मेरा दे। कहने लगी देख पीर मेरे पास पैसा तो नहीं, आप कुत्ता है ये तू खा ला, बस वो कुत्ते को खा ही रहा। इतने चीता आ गया, चीते चीता कहने लगा पैसे मैंने दे। वो कहने लगी कि मेरे कोई पैसे कहाँ से हैं, वो तो मैं लगा लिए है। हाँ मेरे पास लकड़ बुग्गा खड़ा है इसमें तू खा ला। उसने खा ही रहा सी शेर आ गया। शेर कहने करारी तेरी अज भी है ऐतवार और 12 बज के 10 मिनट दिन आ गया है। वो कहने लगी देख प्यारे भाई हमारे पास देने लेने में तो पैसा बिल्कुल लेना है नहीं हुआ। और चीता है ये तू लेना। हूँ चीता भी बड़ा ताकत भी तगड़ा होता है। चीता शेर दोने एक दूसरे को खाण वास्ते चपटे और चौंपड़ी में लड़ाई देख के लूंबड़ी ने बाहर निकल के चौंपड़ी को आग लगा दी। बाहर खुश हो के नाच रही सी कि मैंने कितना पैसा बचा लिया है, लेकिन जब होश
ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ रोने लगी कि मैं इस पैसे पीछे कितना जुल्म किया और कितना अत्याचार किया, कितनी जाना गवाइया, लेकिन वो पैसा मैं राख बना दिता। और मैनू जे पता होंदा मैं ऐसा ना कर दी। सो प्यारे बच्चों, धर्म की किरत ही कामयाब होती है, दसा नौं की किरत ही कामयाब होती है। बेईमानी का जो पैसा किसी को लेने है वो असी कामयाब नहीं हो सकते। लोमड़ी क्या होती है? Squats. Fox. Fox? Epaulettes. Well, this is a story. ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ Galerie और होती है? Fox. This is a story about a clever fox. It is from one of the children's story book. It goes like this: that once there was a very clever fox, and she thought that I'm tired of living this life full of poverty, because she did not have enough money to live on. So she went to a cat and said, well, dear sister, you know that I've been having very great difficulties financially and I don't have enough money, but I am in great need, and if you can lend me $50, I'll give you back in 2 days, and if you can help me. So the cat said, okay, I'll give you the money, but you should give me back on the day you say you will give. So she said, okay, you come 2 days from now at 12 o'clock sharp and I'll give you that money. After getting $50 from the cat, she went to the dog and she said, well, dear brother, you know that I'm in great need, and if you can lend me $100, I'll be very grateful to you, and I'll give this back to you day after tomorrow at 5 minutes after 12. And I promise that I'll give this back to you on this time. The dog was also very gracious and he said, okay, you can take this money but give me back day after tomorrow. And she said, yes, okay, I'll give it to you. You can come to my place to get it at 5 minutes after 12. After that, she went to the jackal and she said, well, dear brother, if you can lend me $200, I'll be very grateful to you because I need the money. And I promise that I'll give it to you day after tomorrow at 12:15. The jackal was also very gracious and he wanted to help her. So he said, okay, you take this money, but make sure that you give it back to me on that day. And she said, well, no problem, I'll give it to you on that day. And after that, that fox went to the leopard and said that, you know, you are very gracious and you have always helped people, and now I am in need, and if you can give me $300, I'll give it back to you on this day. And he also gave the money. And finally she went to the tiger and said that you are the king and you are very gracious and all that, and I am in this great need, and if you can help me out, if you can give me a couple $100, and I promise that I'll give it back to you on this day. So he was also very gracious and he wanted to help, so he also gave that money. So in that way, that clever fox collected a lot of money. And then 2 days later, as she had promised all those people to come and collect their money, first came the cat. And that clever fox spent 5 minutes talking to the cat. And then finally she said, well, I don't have any money. And right then, the dog came and the dog asked for his money, and the clever fox replied, well, you know, I don't have any money to give you back, but I have this cat, and if you want, you can eat this cat. So the dog, because he came there to collect his money and there was no money, so he took that cat away and he ate that cat. And when he was about to finish eating cat, the jackal came and the jackal also insisted for the money. The clever fox replied, well, I don't have any money to give to you, but I have this dog, and if you want, you can eat him up. So the jackal ate the dog, and when he was about to finish his dog, then came the leopard, and the same thing that clever fox told that I don't have any money, if you want, you can take this jackal, because this is the only thing I own. So the leopard also ate the jackal, and afterwards came the king, the tiger. And when he asked for the money, the clever fox replied, well, I don't have any money. Now this is the only thing I have, this leopard, and if you want, you can take this, you can eat it.
Now you know that leopard is also as powerful as the tiger. So they both of them started fighting with each other. The tiger was trying to kill the leopard and to eat it, and the leopard was also resisting. So they both started fighting with each other. And that clever fox left the hut in which she was living, and then she thought, well, now it is a good thing that both of them are fighting, and I should burn this hut so that they both die. So she put the hut to the fire, and then she was becoming very happy that, wow, I have saved so much money, and how I have fooled all these people and collected all this money. I am very clever and like that. And then suddenly she realized that the money which she had collected from all these people was left in the hut which was on the fire. So she did not get any money, all the money was also burned. And then when she realized that how many people she had killed only for that money which she did not get eventually, then she became very sad and she regretted what she had done. So the meaning of the story is that only that money which we earn for, which we work hard for, only that is the money which remains with us, and the money which we get by fooling other people or by some other means, it never stays with us. And that is why we should always remain content on what we earn ourselves. Yeah, please. Well, as we all know that today we'll be singing the bhajans. So those who get accepted for singing the bhajans should please read out the page number so that maybe it's easier for the other people to find that bhajan number. आशा करते हैं वो आपकी याद आसान मौका मिल रहा है ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I hope that all of us will take advantage of this precious opportunity which our beloved Lord Kripal has given to us to remain in His remembrance. All the saints and masters have had their own ways of expressing their love and gratitude for their masters. All the bhajans are full with the love for the master and the gratitude for the master, to the master. And by singing the bhajans, in a way we are also expressing our love and gratitude to the master for what he has done to us. So while singing the bhajans, we should always remain humble and we should always be full of love and gratitude to the master. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਅਖਵਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਐਸਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ If we go to the masters and tell them on their face that, oh master, you are all powerful or you are omnipotent and you are almighty and all honor and things like that, they would not like it and they would not allow us to do that. And also if we go on saying to them directly that we are the sinners, we are the poor ones and this and that and all that kind of stuff, they are not going to appreciate that and they will not encourage us to do that again and again. So singing the bhajans is a way of expressing what we have in our heart for them
that what we understand them and what we really are. It is a very good way of expressing the gratitude and singing the glory of the Master, and at the same time it is a very good way of telling him that we are the sinners and we are the downtrodden, or we are the poor ones, and he should shower grace upon us. Okay, now you can sing the bhajans. झूठा संसार सारा, झूठा व्यवहार सारा, साचा जो नाम तुम्हारा, बोली सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साड़ी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साड़ी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ, सुन के फरियाद साड़ी।
कार्यक्रम के मुताबिक आप सभी लोग अपना भजन अभ्यास के विच बैठो। I thank Guru Kirpal for this precious time. I did not realize that all the time had gone by while singing His glories and singing the bhajans. Now, according to the schedule, those who have to attend the sevas or anything like that, and the kids who cannot stay here for the whole hour of meditation, they should leave, and the other dear one should sit in the meditation.